Hello everyone. The topic which we are going to start today is our poem Go Not to the Temple. So let us start with the introduction of the poet. This poem is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a famous Bengali poet, visual artist, novelist, and a great composer. He became Asia's first person who won the 1913 Nobel Prize in Literature. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक फेमस बंगाली पोएट थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे एंड ही वॉज एशियाज़ फर्स्ट पर्सन. वो एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में लिटरेचर के लिए. सो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन. Now, here we have some word meaning. Let us discuss the word meanings. First of all, there is fragrance. Now, what is the meaning of fragrance? Fragrance means a pleasant or sweet smell, we can say. Next one is altar. Altar means a table. Third one, humility. Humility means the state of being humble. फोर्थ वन फेलो मैन. फेलो मैन मीन्स कंपेनियंस, जो हमारे साथी होते हैं. फिफ्थ वन डाउन ट्रोडन. डाउन ट्रोडन मीन्स बैडली ट्रीटेड और वी कैन से पुअर और नीडी. सिक्स्थ वन सिन. सिन मीन्स बैड डीड्स, जो हम बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं. सेवेंथ प्राइड. प्राइड मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग प्राउड. एट्थ बाव. बाव मीन्स बेंड, झुकना. नाइन्थ लास्ट बट नॉट द लेस्ट इज फॉरगिविंग. फॉरगिविंग मीन्स एक्ट ऑफ फॉरगिविंग, मीन्स किसी को माफ़ करना, किसी को क्षमा करना. सो नाउ वी शैल स्टार्ट विद द पोएम. आई थिंक वर्ड मीनिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल. लेट अस मूव फॉरवर्ड. गो नॉट टू द टेम्पल. सो go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First fill your own house with the fragrance of love. So in these lines, the poet wants to say that there is no need to go to the temple. First, you are supposed to spread fragrance of love in your own house. If there is no love in your family members, you people are fighting with each other, you don't talk to each other, then there is no use to go to the temple and put flowers upon the feet of God. So firstly, what you will have to do? Firstly, fill your own house with the fragrance of love and then go to the temple. Then you can make God happy. भगवान तभी खुश होंगे. यानी शुरुआत अपने घर से कीजिए. पहले अपने घर को मंदिर बनाइए. कैसे बनाइए? सब पर्सन जो हैं वो प्यार से रहें. इफ़ देर इज़ नो लव अमंग द पीपल हु आर लिविंग इन द फैमिली, देन देर इज़ नो यूज़ टू गो टू द टेम्पल. चलिए नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं. गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द ऑल्टर ऑफ गॉड. फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन, प्राइड एंड ईगो from your heart. Means in these lines the poet says that we shouldn't go to the temple to light candles before the idol of God. Rather, we should finish the darkness which is present in our heart. So first of all we should finish the darkness. We should remove the darkness which is present in our heart. And what kind of darkness the poet is talking about? Darkness of sin, darkness of pride. ये जो हमारे अंदर ये जो पाप का अंधकार छाया हुआ है, ये जो घमंड है हमारे अंदर. ही फर्दर सेज दैट इफ़ यू हैव एंगर, प्राइड, ईगो इन योर हार्ट, देन देर इज़ नो यूज़ टू गो टू द टेम्पल. इफ़ यू पीपल आर हैविंग एंगर, प्राइड, so much ego in your heart, then why are you going to the temple? There is no use to go to the temple. So your heart should be pure. You should be pure at heart. only then you will be able to make God happy. भगवान तभी खुश होंगे. यानी सबसे पहले खुद को सुधारिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
Go not to the temple to bow down your head in prayer. First learn to bow in humility before your fellow man. So, further, the poet says that don't bow down your head in prayer. First of all, be humble with others. And you have to be humble with others. अपनी ह्यूमिलिटी को जगाओ पहले. ह्यूमिलिटी इन द सेंस अपनी इंसानियत को जगाओ. You have to be humble with your companion. Be kind. Be humble with your companion. Means love others. Only then you will be loved by all. पहले दूसरों से प्यार करो, तभी दूसरे तुमसे प्यार करेंगे. If you don't have feeling of being humble with others, then there is no use to go to the temple. अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो आप मंदिर जाकर क्या करेंगे? एक दिखावा करके क्या करेंगे? ऐसे भगवान को आप खुश नहीं कर सकते. नेक्स्ट लाइन्स. Go not to the temple to pray on bended knees. First bend down to lift someone who is downtrodden. Means we need not to bend on knees to pray. Rather, we should lift up the poor and the needy. We should help needy ones. If we are treating people badly, we are not helping them, we are not showing any kind of respect towards them, if we don't have such kind of feelings in our heart, then there is no use to go to the temple. अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, we don't have such kind of feelings in our heart, then why we are going to the temple? हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए हम मंदिर जा रहे हैं. So first of all, we should have such kind of feelings in our heart. Next line. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First forgive from your heart those who have hurt you. Means, in this stanza, the poet says that we shouldn't go to the temple to ask forgiveness for our bad deeds. We should first forgive those who ever hurt us. First of all, we should learn to forgive others. पहले दूसरों को माफ़ करना सीखो. If we are not forgiving others, then how can we expect same from the God? अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हम भगवान से कैसे आशा करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए हमें माफ़ कर देगा. द बैड डीड्स जो हम कर चुके हैं, बुरे कर्म, उनके लिए हमें माफ़ कर देगा. So, this was all about the poem. If we people talk about the theme, then what is the theme of the poem? What you people have learned from the poem? Now, according to the poet, before serving God, we must serve humanity. Because serving humanity means loving God. Serving humanity means serving God. So, we should be humble towards others. We should love others. And we should have the feelings of kindness and sympathy for others. Thank you and have a nice day.